श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक बार फिर आपके सम्मुख स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, रेडियो बूस का लक्ष्य है कि वो हर एक व्यक्ति के मेंटल, फिजिकल लेवल की इम्प्रूवमेंट के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है वो करना चाहता है। इसी क्रम में हम हमारे आसपास जो भी लेखक या लेखिकाएं संपर्क में आती हैं, हम चाहते हैं कि हम आपसे उनकी सीधी बातचीत कराएं, क्योंकि किसी भी लेखक या लेखिका का अपना एक रिसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का, समझने का। उनके परसेप्शन को आप तक पहुंचाने के काम में हम आपकी मदद करते हैं। इसी क्रम में आज मैडम शिखा हमारे साथ आए हुए हैं। उनके द्वारा लिखी हुई उनकी पुस्तक पर भी बात करेंगे, उनके व्यक्तित्व, उनके कैरियर के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, और इसके अलावा जो भी उनकी परसेप्शन में और ऐसी बातें हमारे समझ में आएंगी वो हम आपके सम्मुख भी रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं मैडम शिखा से बातचीत करने के। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शिखा, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला और हमसे अपने इस उपन्यास पे बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस उपन्यास से पहले थोड़ा हमें, हमारे श्रोताओं को अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने कैरियर के बारे में भी थोड़ी बात करें, ताकि आपके उपन्यास के चरित्र और उसकी कहानी को और गहरे में समझने में सहायक साबित हो। जी सर, द प्लेजर इज माइन। टाइम मैंने नहीं, टाइम आपने निकाला है और आपकी टीम ने। जी। शिखा सेतिया गुप्ता मेरा नाम है जी, और मैं पंजाब से हूँ जी। अबोहर एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से हूँ। वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ पंजाब। Yes, it was when I was a child. It was the biggest cotton mandi in Asia. Yes. And I remember जैसे नेचर में क्या होता है सर कि अभी कॉटन उग रहा है, and then nature is never static. Yeah. अब कॉटन है नहीं वहाँ पे। Okay. अंगूर था, अंगूर नहीं है. So Okay. nature keeps moving on. So I connect myself a lot with nature. And I usually say I'm a Pinddi Kudi because my father is very progressive farmer. Yes. And so are my brothers now. Okay. And I'm very proud to be a farmer's daughter. Okay. Okay. तो सर मेरी स्कूलिंग अबोहर से ही हुई है, असम्पशन कॉन्वेंट स्कूल। बड़े अच्छे टीचर्स जिनको हम गुरु बोलते हैं वो थे, जिन्होंने हमको बनाया जैसे हम हैं। मैं जब बोलती हूँ तो मेरी पूरी क्लास, वी ऑल एग्री, एंड मेरी पूरी क्लास ही नहीं, काफ़ी सीनियर्स जूनियर्स वी ऑल एग्री दैट वी वर टॉट beyond the textbooks. Right. So that is what is very important in life, because career-oriented things you get it from books. Absolutely. But life-oriented things you get when you go beyond the books. Yes, sir. And also values जो हम बोलते हैं. Yeah. Of course, you get them from home, Yeah. but then when you the real values, when you go out in the world, they also get inculcated because of your neighbors, your friends, your people in the city, in the town, and your teachers. वैसे teachers मुझे पहले बोलना चाहिए था. Right. So Abohar has a very strong social setup. जैसे वो जो हम बात करते हैं कि वो बाहर चले गया, लोनलीनेस है, ये है, लाइफ में प्रॉब्लम आएगा. So नोजी भी होता है सीन स्मॉल टाउन्स का, बट जो सोशल रिच फैब्रिक जिसको बोलते हैं, आई ग्रू अप इन एन एटमॉस्फेयर लाइक दैट. Like I did not have one set of parents, I had several set of parents. Okay. Too much of learning, a lot of learning from everywhere. So I grew up in a house full of books. Okay.
My Bua was a principal. Okay. All of them were, all my relatives very well read. Okay. अबोहर से नहीं बाहर जाके पढ़ के वापस आए वो लोग. Okay. और तो सर माहौल जो था वो बहुत ही सुंदर. घर में हवन हो रहा है, घर बुक से भरा हुआ है, सब कुछ ही, और नेचर है, गांव से सामान आ रहा है, गांव जा रहे हैं, वैसे वाला. उसके बाद सर मैं आई एम trained to be an architect and I have practiced for 20 years. Okay. And I practice at Abohar, I practice at Sharjah, back coming to Delhi. I used to do corporate interiors. Okay. And I am a practicing artist now. Okay. I have had my exhibition last year at Camera Museum, and my next exhibition is planned to be next year in March in India Habitat Center Visual Art Gallery. So I'm working on that as of now. Okay. And I have always been a writer. Again, the influence of my school, mostly I guess. Used to win essay writing competition always. Okay. And so writing came naturally also, and then was inculcated again by Mrs. Iris Azad, our English teacher. She taught us to think. With the help of various techniques? No. Okay. I was waiting to know what your question would be. Yeah. So she taught us to think, to meditate, to just sit silent, listen to all kind of sounds and noises around. Okay. And then to sit silent and not to hear a sound around, and to question and how to frame and how to put your thinking in writing. Okay. So that is why I think the proper way to think was taught to us. Okay. Shikha ji, I am reminded of one of my rubai. Rubai क्या होता है sir? I'll explain to you. Let me first recite my rubai. It says कि छोड़ बाहर को और मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके हैं मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख. Now this rubai is one particular vidha by which you express your poetry. Okay. It consists of 4 lines, conveying one complete meaning in that, right? So there are various vidhas which are available with shayars and poets to convey. So this is one of the technique of conveying your poetry. I learned something new. Yeah, चलिए आगे जी, चलते और हैं. मैं practicing artist हूँ, मैं paint करती हूँ. Yeah. And I am also a photographer. Okay. I seldom take up assignments that I enjoy. And I am on to writing my second novel. The second novel is about pilots. Okay. I'm a mother of 2 children, a Okay. very happily married woman, Okay. and also married to an architect again. Okay. So, and blessed with an amazing family. Okay. Okay. And set of friends, and you keep meeting people of your own Yeah. kind. You know, primarily, I personally feel, Shikha ji, that if we are genuinely happy from within us, Yes, we radiate happiness. absolutely. And in that process, whosoever come across in your company, they only add to your happiness. And those who are not able to add to your happiness, they are being rejected slowly and without any much hue and cry. And you If you keep let on. it. Yeah. Then you keep on going. So that way I agree with you that if you are internally happy, then you are being surrounded by happy people. You've just spoken the synopsis of a good book. Anyway, we'll discuss in details further. Now coming to your this novel plus your own career. So after graduation from Abohar only, but you must have I done... graduated from Batinda. I Okay. studied architecture from engineering college, Okay. Punjab University. Then you
got married and then Sorry, Punjab Technical University. yes, then you after that you came to Delhi. Delhi. I trained in Delhi while I was studying. Then I fell in love with Delhi, especially Connaught Place. Okay. Then life is full of possibilities. I always say life is full of possibilities. This Yes. is what you should feel in the morning, not tell yourself, Yeah. but you should feel Yeah. inherently. Yeah. So life was full of possibilities. I fell in love with Delhi. I wanted to be in Delhi, and by God's grace, that happened. I moved to Gurgaon. And then I do not know, somehow I wanted to go to Sharjah. I don't even know how the Sharjah came up with the conversation with a friend or something. And believe you me, I went to Sharjah in 1 year. I mean, it just happened. My favorite words are joy and serendipity. And it just happened. So I enjoyed my life there. Went to London also for a bit. And then I was there, and it was again, when you go to a new place, it's like the beginning of a new life, if you let it be again. Yeah. So I did that. Okay. And I enjoyed, loved my time there, and searched within, explored, remained open to everything possible, and absorbed as much as possible. Okay. So coming back to, then we came back to Gurgaon, and I started my practice while rearing my children, and which I think is the most important and the most satisfying job. Okay. Rearing your own children, making them Yes. good human beings, and I am blessed with 2, as I said. Yeah. So that has One been- daughter, one son. Yes, a son and a daughter, Okay. and a nephew. So I actually have 3. So then it was a time to either scale up the business or, and then I'm always a person who wants to explore more and more. I cannot be bound or tied to one. So I painted. And I painted, and it made me very happy also, and then there was a lot of contentment. Yes. So I started painting. Okay. So it became a, जैसे कहते हैं ना, मिश्रण है, जो भी सुंदर आप अच्छा फुलफिलिंग काम कर सकते हो उसका, तो वो है। और मेरे दिन बहुत वो है अच्छे गुजरते हैं। जी, खुशी। I am reminded again one more rubai. It says कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझे। तो फिलोसफिकल। यस, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में बहुत से ऐसे व्यक्ति छुपे होते हैं बिल्कुल, जिनकी तलाश उसको रहती है और रहनी भी चाहिए। जी जी जी। थक जाते हैं वो लोग जो इस तलाश को छोड़ देते हैं। अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को ज्वलंत रखने के लिए इस तरह के पहलुओं को जितना आप एक्सप्लोर करते हैं, उतना आप जीवंत रहते हैं, उतने ज्वलंत रहते हैं और उनका डायनामिज्म आपको नजर। सर, जो आप बोले बहुत अच्छे से, वो एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। Yes. अगर वो नहीं कर रहा है अपने आप का Yes. सर्च, आई कॉल इट सर्च एंड फाइंड, Exactly. यू पुट इट इन बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल नहीं, वर्ड्स। नहीं, fair enough, fair enough. जो आपने बोला, मैं Yeah. उसको रिपीट भी नहीं करना चाहती। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ रिजुविनेशन की जगह रेनो अपने आप को फिर से नया ढूंढने के ऊपर लेके जाता, सेल्फ reinvention. Yes. So that is very important for any artist. Yes. So that is also a part of my novel. Yeah. This is the journey of artist and the relationship between artist and muse. Yes. Not like one artist, one muse, like generally. Hmm. And muse, I say, is also an artist. Yes. That muse, her or he, will also have other things to muse about. Hmm. So this, I always say, the artist and the muse relationship is very intuitive. Hmm. You don't even need words. Hmm. It's all
out of intuition, Right. but also it is extremely complex. Okay. So this novel talks about stuff Same. like that. Yes, it does explore Yeah. this in detail. I'll request you to first give brief story of your novel so that All right. our listener can connect themselves easily with various characters on which we are also going to. All right, I Yeah. will just finish what I was saying. That Yeah. this explores that relationship in the realms of art, theatre, photography, Okay. and more. Okay. So that is all a part of it. The protagonists are photographers. Mm. So the story is based in the timeline of 2007, Okay. around that time, starting from there. Mm. And it's the journey of Ria, Mm. who is a naive and a photographer, Okay. self-trained one, and then her relationship, the creative expenditure that was taught to her, the importance of creative expenditure Mhm. from your mind, Mm. which was taught to her by Abhiyansh, who is a photographer based in Delhi. Abhiyansh was a war photographer, Okay. and now he teaches photography and takes up assignments. Okay. Then Ria moves to Sharjah, Mm. and there she explores, and her skill is further polished by Mr. Sabha, Okay. who Mr. Sabha is from Pakistan. Okay. He's a very old and renowned man, a Hmm. very pious man. Mhm. जैसे बोलते हैं कि faith उनका personification of faith. Okay. And then Ria also learns that India में हम रहते तो her boss was a Pakistani, her help is from Bangladesh, and the drivers, the taxi drivers are from the subcontinent, wherever, and we all live like cousins there. Mm. Okay. We have the same language, Mm. only their Punjabi is sweeter than ours, Mm. their Urdu is nice, and then we are all cousins. ईद भी उतना ही सुंदर है जितना दिवाली है, Mm. और वैसे ही लोगों के साथ रहते तो वैसे ही रहते. So this is one cultural aspect she learns, and which she thinks is very missing in the West or even in Britain, where she's been for a while. Mm. And then every place has its very rich culture. Okay. You can draw parallels also, but then if you delve into any culture, the world is just rich in art. Yes. So she learns that, and then it's her personal story as well. And I always like to stop somewhere so that I do not keep on going ठीक about है, it now. ठीक So है. I'll stop here. हाँ. Okay. तो इनमें से जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जी. आई थिंक वो रिया का बनता है. If I'm correct. हाँ, आप अगर डिबेट करना चाहे तो अभियांश का भी बनता है. Okay. Okay. अभियांश तो is हम an एक-एक artist करके- whose brain and whose mind I have talked. Okay. हाँ जी, हम एक करके बात. तो हम रिया से लेते हैं. रिया के कैरेक्टर को आपने किस तरह से बिल्टअप किया, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या स्पेशल फीचर्स आपने स्वयं में ऑब्जर्व करी और फिर उनको लिखा और बिल्टअप किया. Okay, if we want to discuss characters one by one, हाँ. तो मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ जो मैंने अभी नहीं बताया. वो एक ही कुछ टाइम के लिए ही है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि बिल्ड कैसे किया, उसमें मैं ज्यादा कोरिलेट कर पाऊंगी. जो आप मुझे कोरिलेशन मांग रहे हैं विद रिया, आई थिंक आई रिलेट मोर विद दैट कैरेक्टर. Okay. She comes from the same background as me, and her name is Arija. अच्छा. Arija is in a small town in Punjab. Okay. Or Ria is sent to Punjab because she is a city girl. She lives in Basant Kunj, and she is very not self-contained, but is very sure of herself. So she needs to be exposed to the world. उसको जिंदगी देखने के लिए और जिंदगी समझने के लिए अभियांश उसको बोलता है कि तुम विलेजर्स के बीच में जाके बैठो, विलेजर्स के साथ जिंदगी महसूस करो, और वो जो महसूस आप कर रहे हैं उसकी कहानी फोटो में खींच के लाओ. क्योंकि और उसको हम बोलते हैं पिक्चर, फोटो उर्दू में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है तस्वीर. तो बहुत कहानी सुंदर दिख रही है और आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, तो बोलते वहाँ क्या तस्वीर बनाई है.
It is not like that you have clicked a picture or you Yeah. have captured an image. So it's like It is portraying somebody's character. yeah, that too in a Yeah. story actually. हाँ. मतलब उसके आगे पीछे आप स्टोरी बुन सकते हैं या उससे एक फोटो में ही आप तस्वीर में आप ढूंढ सकते हैं. तो उसको भेजते हैं कि जाओ काम जाओ तस्वीर बना के लाओ देख के आओ दुनिया. So she goes to meet Arija, and then she stays at Arija's house. And then Ria says that I want to meet Arija again because this girl has no possibility of faults. She's just too strong and she's too Perfect. kind of perfect. Yes. Okay. अगर आपको सब बचपन में ऐसे बोले कि अच्छा है आप बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो तो आपके ऊपर एक कहीं कुछ क्लाउड भी होता है कि आपको अच्छा ही रहना है. Yeah. तो आप नॉटी नहीं बनते आप शरारतें भी नहीं करते. सो Yes. शी इज वन ऑफ दोज काइंड्स. Okay. So I will tell a little about her. We can talk about Arija today. Anyway. Yes. So I started with the days and his sometimes make it clear. तब तक आप एक्सपीरियंस ही नहीं करते तो कुछ क्लैरिटी नहीं होगी. Yeah. So Arija's belief was in nature as one's belief is in prayer. Ria tilted her head upwards amidst those tall trees. Those tall trees are eucalyptus with Arija. The white, bluish green flaky sepias and all colors are in between looked unspoiled, just like Arija. Okay. तो उससे बात करने लगती है उसके इन्वायरमेंटल पोर्ट्रेट खींचती है. तो वो बताती है कि अरीजा के एक बार वो बस से घर जा रही थी. सो दिस इज फ्रॉम 90s and this is nothing to do with the stubble burning which came up now. जब दिवाली पे क्रैकर्स were not a problem and stubble burning was not a problem. It was just the way of living. So I hope it is not judged like that in today's context. Yeah. She saw a man afar emerging from the fields after having set crops stubble ablaze. That is a traditional way of cleaning the field, and the farmer was walking towards the road, away from the fire at a habitual pace. He wasn't rushing. The sun had set, and the silhouette of the man against the fiery colors and swaying flames behind, she couldn't forget. That gave her an impression of how nature was unfathomably strong. But man in his own small ways could harness nature and vice versa. So this girl has built her philosophy over the years with the surroundings and the imagery she's been to. So whatever happened to the dispassionate ways of compiling factual reality and see words differently? You choose how to look at the world. I choose not to look at it in a very clever way. She had retained her vision, nice and simple. So she understood the traditional values and how important traditions were, but she also understood that in order to contemporize that, one had to be a little rebel. Okay. So that is what that girl had been trying to do. And also I would love to visit a place like that. Her room is full of heirlooms, and जिसने भी जो पुराना सामान फेंकना है तो उसको दे दो. So that is also a part of it. Then Arija, she visits a farm. Should I continue with this? Or maybe we can come back to this later. Yeah. I want to tell you about poplar trees here. Because I think with our conversation, the character will be more alive than reading out of it. Yes. We can discuss. Yes. So please, you come out that what conclusions she has taken in her life out of. Okay. Then Ria visits a farm which is a poplar tree plantation. I mean, just on the way. On the way she spots this and she gets down, and then poplar plantations, you must have seen, sir. Poplar plantations are vertical trees, and the foliage is not very big in diameter, and the जो पत्ते हैं वो शेड होते हैं विंटर्स में, पीले हैं, ऑरेंज हैं और ब्राउन तो होने ही है. सो वो ऐसे आराम से ऐसे फॉल करते हैं, लाइक अब मेरा कोई काम नहीं है तो मैं एंजॉय करके ऐसे बस स्वे करके नीचे गिर रहा हूँ. एंड द मल्च इज दिस थिक,
अगर आप उसमें चले तो वो इतना थिक मल जाता है. Right. And when there's fog in winters, आपको ऐसा long perspective में ये trees दिख रहे हैं, and then it's foggy ahead, it looks heavenly. And if there is, so this girl visits with Arija's brother and Arija's brother's daughter, little daughter. She visits this farm, plantation. There's only one old man sitting there, and the old man has a granddaughter, same age as this girl. And that person doesn't even give too much of heed कि कोई आया है जा रहा है, कोई ऐसे गेट खुल गया वो अंदर चले गया, वो आग ताप रहा है तो भाई जाके साथ में आग तापने लगता है. अरीजा तो क्रेजी हो जाती है देख के, बबली है जंपी है, अरीजा नहीं सॉरी रिया तो बबली है जंपी है, वो तो क्रेजी हो जाती है, ऐसा इतना सुंदर कुछ देखा ही नहीं है, और वो भी शांति में. तो फोटोज खींचती है, देखती है पत्ते बस गिर रहे हैं, कुछ वाइट बर्ड्स हैं जो बीच में से उड़ के जाती हैं. तो आई हैव टू ब्रिंग यू दीज फोटोग्राफ्स नेक्स्ट टाइम. देन व्हाट शी लव्स इज दैट easiness in companionship. Nobody knows anybody. Okay. That man gets up and then he lies down on his cot. His cow is sitting beside him and he's just looking at the sky. The little girl is on a jhula. The other little girl goes and stands with her. No talk, nothing. And then when they are about to leave, like it's a big description, I am just trying to make it concise. And then when they are leaving, the brother asks the little girl, should we give your clip to the other girl? And she says, yeah dad, I have thousands, you can give it to her. And they just put that clip onto her girl. There is no thanks, there is no money exchange, there is no ki chalo milne the to. So from a city girl, from being in Delhi to having gone to a place like this, where there was no angle of commercial and there was no angle of sir chai pee lijiye, and jisko bolte just be. So this is Riya's big learning and taking. Are you inspired by some philosophy? Sir, I'm very, very inspired by Swami Vivekananda. When I was a child again, I was in 6th standard, I happened to read a book about Swami Vivekananda. That really influenced me. You know, once when Kabir got enlightenment, he was asked, what is the change in your life after enlightenment? He said कि जब मन करता है उठ जाता हूँ, जब मन करता है सो जाता हूँ, जब मन करता है खा लेता हूँ. बस यही एनलाइटनमेंट है कि सब कुछ सहज भाव से अगर होने लगे तो समझो कि आप स्वयं में जागृत हो गए हैं और स्वयं से भी मुक्त हो गए. सो व्हाट आई फाइंड इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, आई फील दैट समवेयर बीइंग नियरनेस टू नेचर एंड बीइंग वन विद योरसेल्फ is the theme which really touches you in your personal life as well. Absolutely, sir. आप बात कर रहे थे तो मैंने अपने नेफ्यू का नाम स्वयं रखा इसीलिए. Okay. And when, like what you say, I'm not sure how much corresponding it is, but गांव वाले तो ऐसे ही होते हैं. Italians भी मैंने सुना है कुछ हद तक ऐसे होते हैं. But it depends how much our modern civilization has affected them. भाग भाग नहीं थी सर, अभी है. हाँ, yes. जो ट्रेडिशनल हाउसेस थे सारे टूट के कोठियां बन गए. या. और एसी लग गए. मैं जाना है वापस हमको उधर. मैं कहा करता हूँ कि खाम खा दौड़े जा रहे हैं और ध्यान से देखो ये अभागे भाग रहे हैं. तो ये जो अभागे भागने वाली बात है ये धीरे धीरे गांव में भी शुरू हो गई है. शहरों में तो है ही है. शहरों में तो कॉम्प्लेक्स आ जाता है. सर शहरों में तो यू टर्न आएगा. यस. आना शुरू भी हो गया. हाँ. गांवों में अभी भागना शुरू है. एग्जैक्टली. दिस इज व्हाट. सो व्हाट अदर फीचर्स resemble in your character with the autobiographical touch?
Well, it is not exactly an autobiography, but then we all understand that when we start writing, Yeah. something from our own innate sense will come out. Yeah. लिखते तो आप खुद के लिए ही हैं, खुद से ही शुरू करते हैं हमेशा. Yeah. एंड देन इट वाज सर मेरे को इसको लिखने में 7 साल लगे. अच्छा. मैंने फोटोग्राफी इसको लिखने के लिए सीखी. ओके. और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों से मिली मैं, और उनकी ज़िंदगी के साथ भी एम्पैथाइज किया, इतना कि अगर उनको दर्द हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है. अच्छा. तो डेप्थ में घुसने के लिए. बाकी अगर आप बोले तो जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ, तो एट हार्ट तो हमेशा से ही थी, पर सीखा इसके लिए लैंग्वेज के लिए. तो फोटोग्राफी, थिएटर, मैं थिएटर आर्टिस्ट थी, लिटरेचर, जो मेरे अपनी हॉबीज़ या मेरी जो हॉबीज़ नहीं बोलेंगे, जो पर्सनालिटी के आपके इनहेरेंट कैरेक्टर बन जाते हैं धीरे हॉबीज़ के बाद जब बढ़ते जाते हैं, तो वो सब है. मतलब इट इज़ सिनोनिमस टू माय ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. मेरी अपनी जो थॉट ऑफ, जैसे मैं इसमें कुछ डिस्कस किया है अबाउट पेंटिंग्स वर्सेस फोटोग्राफी. मैं फोटोग्राफर भी हूँ, मैं पेंटर भी हूँ. तो उसमें उसके छोटे छोटे न्यूएंसेस कि फोटोग्राफी में क्या खूबसूरत लगता है. फिर सर मैं आर्किटेक्ट हूँ, और इसमें जो अभियांश है वो आर्किटेक्चर फोटोग्राफर भी है, सबा सर भी है. तो कोरिलेशन ऑफ मेनी ट्रेड्स ऑफ आर्ट्स. When you read about architecture photography, you will feel that this has been written by an architect. Okay. So, what ultimately comes the conclusion or solution vis-a-vis life as far as this particular type? We all will see ups and downs. Happiness is difficult to handle. Not everyone can recognize, enjoy and hold happiness. दुख होता है तब याद आता है, अरे वो तो हैप्पी डेज थे. तो जब हैप्पी डेज मिले उनको जी लीजिए. Recognize it. This is a state of emergency. Recognize this is happiness. Live happiness. Then it will. Then जब वो डाउन आएगा तो आप फटाक से वापस आ जाएंगे to happiness. Live it like this rather than this. We all look at life and everything through certain shades. Yeah. Those shades could be of happiness, those shades could be of reality, those shades could be of, I call them rose colored glasses हैं, कभी desert वाले glasses हैं, कभी बिल्कुल मुझे कुछ देखना ही नहीं है, I want to be blinded. And sometimes we need to take off those shades and put the reality glasses. So we should choose how do we look through the shades. And I choose them as the shades of joy and serendipity, as I said again. So these are the lessons which are being derived by the character as well. Absolutely. And how to, whatever it takes, whatever trouble or depths or understanding of art or theatre it takes, जिससे भी reflection या अक्स आप जो बोलते हैं मिल जाए, समझ आ जाए, let it go. Yeah. Let it go, move on, and then life again will bring more possibilities. So just keep on changing shades, checking shades, choose your shades. Okay. So while writing such novels which apparently doesn't seem to have such deep philosophy undercurrent, but actually must have added certain philosophies behind writing this. Yes, it is a learning. It's a very, very big learning. And you've lived so much of it, if not within yourself, then through others. So I want to take up this discussion in detail once we discuss this book. Okay. So, श्रोताओं, हम आज की इस डिस्कशन को यहाँ इसलिए छोड़ रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे पास मिस्टर राजेश्वर विशिष्ट भी होंगे और ये किरदार और आगे क्या शेप लेते हैं उनके बारे में भी जानेंगे. तो आज हम आपसे इतने उसमें ही विदा लेते हैं
और इंतज़ार करिए हमारी अगली डिस्कशन का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Hello. So, as discussed with Mr. Mukesh, my novel is a must read for people who want to talk about architecture or photography or art theatre. And it's available on Amazon and on Flipkart. Also, if you like to follow me on Instagram, my Insta handle is AR Shikha Setia.